Assalamu alaikum students. This is your English teacher from FEI. I hope you all are very well. Today our topic is prepositions. We shall be talking about it. Let's see what is it all about. First of all, meaning of preposition. Preposition tells us the position of something in relation to another. तो preposition का क्या काम है? A word that shows the relationship between a noun or pronoun and other sentences, other words in a sentence is called preposition. Preposition एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो यूजुअली हम नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं टू शो इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स. वो समथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है. दैट कैन बी एन एडजेक्टिव, दैट कैन बी एन एडवर्ब और दैट कैन बी एनीथिंग. तो प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है टू शो इट्स रिलेशन विथ समथिंग एल्स इन द सेंटेंस. नॉर्मल यूजेज में हम इनको पोजिशनिंग वर्ड्स भी कहते हैं बिकॉज इट शोज अस द पोजिशन ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन. एंड देन इट हैज़ सम अदर एस्पेक्ट्स एज वेल जो कि हम देखेंगे. Based on their use in a sentence, the prepositions are divided into categories of. चूँकि प्रपोजिशंस जो है डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है एक सेंटेंस में, तो उसी यूजेज के बेस पे प्रपोजिशंस को जो हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, देन कम्स प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड लास्टली प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट. I'm sure it's very easy to understand because the names are quite easy. So you must have started guessing what should be a preposition of place and a preposition of time and then preposition of movement. We shall be discussing each of them in a detailed way. Now first of all, let's talk about preposition of place. Preposition of place क्या होता है? I think it's quite easy for you to guess. क्योंकि place use किया गया है, तो of course it has to do something with जगह. Preposition of place refer to those prepositions which can be used to show where something is located. Preposition of place का क्या काम है? इसका ये काम है कि ये हमें हेल्प करता है ये समझने में, ये दिखाने में कि कोई चीज़ कहाँ पे लोकेट है, whether we are talking about noun or a pronoun. जब हम उसके साथ preposition of place लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है ये चीज़ जो है कहाँ पे located है. That's why preposition of place. We have certain examples over here. Let's see. Here are some examples for preposition of place. So the words which are in green, make sure that you'll keep them in mind because they are the words which are used whenever we talk about preposition of place. We have above, up, after, on, before, against, by, behind, below, along, near, down, in, at, across, inside, between, and over. So all these words, all these prepositions are used when we are supposed to show a location either of a noun or a pronoun. Okay? Now let's analyze certain examples over here. The aeroplane is flying above the clouds. ठीक है? Aeroplane की बात हो रही है जो कि उड़ रहा है. कहाँ उड़ रहा है? बादलों से ऊपर. तो ये जो above है ये एक प्रपोजिशन है यहाँ पे. ठीक है, ये हमें जगह दिखा रहा है कहाँ? बादलों के ऊपर, बादलों के साइड पे, बादलों के नीचे. सो ये जगह, तो क्योंकि above वर्ड यूज़ किया गया है तो बादलों से ऊपर. ठीक है. The dog buried the bone under the ground. डॉग जो है उसने जो एक हड्डी है वो कहाँ दफनाई है? अंडर, नीचे, ग्राउंड के नीचे. तो अगेन जगह बताई जा रही है. Our house is at the end of a street. At the end, एंड पे. या the cat ran across the road. आर पार. ठीक है. तो ये सारे वर्ड जो है आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी खुद भी यूज़ कर सकते हैं इन जो मैंने ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के. ये सारे जो वर्ड्स है ये हमें हेल्प करते हैं कहाँ पे? जब भी हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की लोकेशन दिखानी हो. तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. For example, we have at. We can say Rahul is at the office. Okay.
or we have above. We can say there's a sign above the entrance. Inside. Let's see what's inside that box. ठीक है? Next comes preposition of time. Now let's see what is this preposition of time. Again, very easy to guess because time has been mentioned, so yeah, you can very well guess it. A preposition of time helps to link the noun or pronoun with a time value. It functions as an indicator as to what point of time did an event occur. तो preposition of time का क्या काम है? ये help करता है indicate करने में कि कब कोई इवेंट जो है हुआ है, और ये हमें कब ये इंडिकेट करके देगा, जब हम इसको यूज़ करेंगे नाउन या प्रोनाउन के साथ with a time value, यानी कि we will be talking about time, then only we'll be able to understand at what time did an event occur. Again, we have few examples here. So words in green, they will be used when we talk about preposition of time. That is about, before, for, by, around, in, ago, at, past, since, to, on, after, until, between, during. So you must have observed that certain words are getting repeated, which we read in the preposition of place. So they're also used in preposition of time, but they depend on the sentence how we are going to use them, and then they show the time when a particular event occur. The first example which we have here is the train is about an hour late. ठीक है, almost, about, 1 घंटा जो है लेट हो गई है ट्रेन को. The classes begin at 8 o'clock. क्लास जो है कितने बजे स्टार्ट होती है? 8 बजे. तो ये जो 8 हमने यूज़ किया है टाइम के साथ, ये इंडिकेट करता है एक एक्शन, एक इवेंट होने वाला है कितने बजे? 8 बजे. सो प्रपोर्शन ऑफ टाइम. या माई बर्थडे फॉल्स ऑन वेंसडे. इंडिया हैज़ बीन इंडिपेंडेंट सिंस 1947. वक्त से आगे, डेट से आगे जो सिंस, ऑन, एट, अबाउट है, ये हमें टाइम दिखाता है किसी पर्टिकुलर इवेंट का. इसके अलावा भी आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिपोजिशन ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कीप माई कार अंटिल मंडे. कब तक? मंडे तक आप मेरी कार रख सकते हैं. या आई विल बी एट द ऑफिस बाय 8. यू मस्ट बी बैक बाय midnight. So these are the words which we use whenever we talk about preposition of time. Next comes preposition of movement. Now let's see what preposition of movement is. A preposition of movement is used to show movement to or from a place. तो ये हमें क्या दिखाता है? It indicates movement. ठीक है? And usually it is used with the verbs. फॉर एग्जाम्पल कम, गो, वॉक, मूव, फ्लाई, इन सारे वर्ड्स के साथ जो है ये प्रपोर्शन ऑफ मूवमेंट हम देखते हैं. ये हमें दिखाता है कोई मूवमेंट हो रही है कहीं से या कहीं तक. डाउन, पास्ट, इनटू, बिहाइंड, अप, ऑनटू, थ्रू, ऑफ, ओवर, ऑन, अक्रॉस, एट, बाय, फॉर, आफ्टर, टुवर्ड्स. The cat has climbed up a tree. ठीक है, तो मूवमेंट दिखाई जा रही है किसकी? कैट. अगेन इट इज़ नाउन हेयर एंड इट सेज दैट इट हैज़ क्लाइम्ड अप अ ट्री. एक पेड़ पे चढ़ गई है. द चिल्ड्रन गॉट ऑफ द बस. बच्चे जो है बस से नीचे उतर गए. ठीक है, गॉट ऑफ मीन्स बस से नीचे उतर गए. अगेन इट इज़ अ मूवमेंट. शी रैन अलॉन्ग द पेवमेंट. या द बस गोज टूवर्ड्स द मार्केट. कहाँ की ओर? मार्केट की ओर. ये सारी जो है मूवमेंट दिखा रही है. इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर. या वी ड्रो थ्रू द टनल. शी रैन डाउन द स्टेयर्स. So these are the examples which you can use in whenever we're talking about proportion of movement. So mainly based on the usage
of these prepositions in sentences. We have preposition of place and preposition of time and then preposition of moment. I gave you the different examples. You can use others as well, because all the words which were in green, you can use them in different sentences. Go through the video again, try to practice and make different sentences out of these prepositions so that you can get the rules very clearly. I shall be back with another video. Till then, you take good care of yourselves. Fi amanillah.